Today we'll go further. The nature of the Indian economy. ठीक, नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि the general criteria for differentiating a developing and a developed nation is 1/4 the per capita gross national income of the United States of America. And so with this criteria in mind, we came to the conclusion that India is a developing country. Secondly, we considered the parameters of the World Development Report of the UN, and we came to the consequence, or rather the result, that India is a lower middle income economy. ये दो चीज हम लोग देख लिए. Now, the criteria for development not only includes national income, or for that matter per capita income. It transcends beyond that. So the criteria for development includes क्या क्या भाई? सबसे पहले per capita gross national income. This is the primary consideration. National income. ठीक है. Then secondly, advanced technology. ठीक है ना, so that the capital output ratio is reduced, है ना. You can produce, manufacture at a lower cost. जितना ही अच्छा टेक्नोलॉजी होगा उतना ही कम लागत प्रोडक्शन का लगेगा. तो एडवांस टेक्नोलॉजी, थर्ड as it is, the social sector is also very important, but before that, infrastructures, है ना, developed infrastructures, and services. Services में there are two important aspects. First is education, and second is health services. ठीक है. और एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए एटलीस्ट हेल्थ पैरामीटर्स में दो चीजें इंपैरेटिव हैं. पहला तो ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी should be above 75 years. ठीक है. And the second thing, infant mortality rate, मतलब बच्चा पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अगर मर जाता है तो उसको इन्फेंट मॉर्टल कहा जाता है
है ना, मोर्टालिटी ऑफ द इन्फेंट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR should be below 10 per 1000 live births। ठीक है, मतलब 1000 में 10 से ज्यादा बच्चे अगर मरते हैं जन्मजात शिशु, तो वो इकोनॉमी एडवांस नहीं है। तो ये कहना कि बस एक क्राइटेरियन पर कोई भी नेशन एडवांस्ड है, ये ठीक नहीं होगा। अ वेरी वेरी पर्टिनेंट एग्जाम्पल इज कतर। Qatar, it was in the news precisely because the Prime Minister paid a visit. तो Qatar per capita income of $88,000। ठीक, राइट? तो दैट मीन्स इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, बट कतर इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। इट इज क्लासिफाइड एज अ डेवलपिंग कंट्री। कतर इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि वही एक क्राइटेरिया नहीं होता है, वही एक क्राइटेरिया नहीं होता, वो चारों क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। इट इज क्लासिफाइड एज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकम इनइक्वालिटीज आर वेरी लार्ज। इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। द इनकम डिस्पैरिटीज, द स्क्यूनेस इन इनकम इज वेरी लार्ज। कोई बहुत अमीर है तो बहुत ज्यादा गरीबी भी है। तो इसीलिए फर्स्ट, इनकम डिस्पैरिटीज are very large। ठीक है, भाई कोई बहुत अमीर है, देखिए एक डेवलप्ड कंट्री के लिए ये जरूरी है कि अधिकतर लोग संपन्न हो, खुशहाल हो। कतर में क्या है, कुछ लोगों के पास एस्ट्रोनॉमिकल वेल्थ है और अधिकतर आबादी गरीब है। सम आर बीइंग स्टफ्ड टू डेथ एंड सम आर बीइंग स्टार्व्ड टू डेथ। कुछ चूस चूस मर रहे हैं, कुछ खाए बिना मर रहे हैं, है ना। मैक्सिम गोरकी ने बहुत बढ़िया लाइन कहा था कि वे रिचेस पाइल एंड मेन डीके, अमेरिकन सोसाइटी के बारे में। दौलत का अंबार लगता है, इंसान सड़ता है ना। वे रिचेस पाइल एंड मेन डीके। तो इनकम डिस्पैरिटीज आर वेरी लार्ज। सेकेंड, illiteracy is high। And third, the health infrastructure is not developed। थोड़ा भी उनको गहन बीमारी होती है तो विदेश भागते हैं, यहाँ भारत चले आएंगे, बंबई, ऐसे करके। हाँ,
health infrastructure is underdeveloped. तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि all the four criteria are very important in classifying a country as a developed country. Now, coming to the Indian economy and social system, the salient features of the Indian economy हम लोग देखा जाए तो हम लोग पाते हैं कि सबसे पहली चीज लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। As it is, as on the 1st of October 2023, A. The per capita income of India on exchange rate basis is equal to $2,400 and on purchasing power parity basis, और ये क्या दोनों है ये मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ, on purchasing power parity basis it is $6600. Similarly, the per capita income of the USA on exchange rate basis this is equal to $74,000 on purchasing power parity basis $69,000. The per capita income of Japan, exchange rate
basis, $44,000. Purchasing power parity basis, $42,200. तो देखिए लगभग नियर इक्वालिटी है. दैट मीन्स द जापानीज मार्केट इज द मोस्ट बैलेंस्ड मार्केट इन द वर्ल्ड. परचेसिंग पावर पैरिटी और एक्सचेंज रेट लगभग बराबर है. एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना, exchange rate basis, $12,700. Purchasing power parity basis, $13,500. हाँ चाइना में भी लगभग सेम है. ठीक है. नाउ अगर इफ वी कंपेयर द पर कैपिटा इनकम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. अभी 2 साल पहले बीपीएससी में एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा था कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नेशनल पर कैपिटा इनकम. तो ये दोनों चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है ना, तब जाके आप बता पाते. तो उस समय बिहार की पर कैपिटा इनकम लगभग 60-65 रुपया थी और नेशनल 1,45,000. तो ले दे के लगभग 40% आ रहा था, वही आंसर था, है ना. तो हम लोग को अब इससे देखिए डेरिवेशंस क्या क्या करना है ना. Per capita income of India, and I am considering only on exchange rate basis, rate basis. The per capita income of India of USA is equal to 74,000 upon 2,400 is equal to about 30 times. Not exactly 30, 31 times. That of India. And per capita यही दो पूछेगा आपसे. Per capita income of China is equal to 12,700 is equal to approximately 6 times. ठीक है, that of India. Now, as per the latest figures available, the India's standing as far as per capita income is concerned is 142 out of 197. ठीक है ना. We have the UN membership of 197 countries. So out of that 197 countries, India ranks a lowly 142. ठीक है.
from the point of view of per capita, income, India ranks as 142 out of 197 in the world. ठीक है सर आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं हैं आउट ऑफ द हाँ ट्रैक कोई बात नहीं झारखंड का कंट्रीब्यूशन कितना है इंडिया के जीडीपी में से इट्स अराउंड 2.5 लाख 1 to 1.2%, लेकिन इस पर अभी डेफिनेटिव नहीं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स अवेलेबल है। आई टेल यू वन थिंग, झारखंड जीडीपी इज अराउंड 3 लाख करोड़, हाँ अराउंड 1 to 1.2% कर सकते हैं, 1 to 2%, है ना। तो सर ये लमसम में इसके कितना में ये आ जाएगा सर इंडिया के कंट्रीब्यूशन इंडियाज जीडीपी, हमारी आपकी बात हो चुकी है 309 लाख करोड़, झारखंड का जीडीपी लगभग 3.5 लाख करोड़ है। 3.5 लाख करोड़ तो और सर यहाँ का पर इनकम कितना है पर पर्सन per capita income at current prices, the per capita income of Jharkhand at 2023 prices is around 95,000 rupees. झारखंड का हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स आपको जब मैं इकोनॉमी ऑफ झारखंड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। नाउ द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू कंसिडर, अब देखिए हम लोग पर कैपिटा तो देख ही लिए, है ना। पुअर मैन पावर, है ना, पुअर and substandard manpower. Now friends, our condition as far as human resources are concerned is not very encouraging. As per the United Nations Human Development Index, the United Nations Human Development Index HDI outlines 3 criteria पहला स्प्रेड ऑफ लिटरेसी या लिटरेसी रेट,
Second, access to education. Third, access to health. ठीक है? These are the three things that the United Nations Human Development Index considers. Now, each of this is measured on a scale 0 to 1.0. ठीक है? Each one of these. And a country scoring 0.8 in each section, segment, or on the average is classified as developed. ठीक? India's score in 2023 Human Development Index was 0.633. And India was ranked 132 out of 197 in the Human Development Index. In the Human Development Index, in 2023. तो यहाँ भी देखिए, India is not very well placed. It has got a lowly Human Development Index. So you cannot classify it as a developing country. Now coming to specific parameters, the Indian government spends, as in 2023, the Indian government plus state governments spent 2.1% of the GDP on health. ठीक है? जबकि it was only as less as 1.6% of the GDP in 2020. It was as low as
1.6% of the GDP in 2020. ठीक है? Now, friends, the prescription of the World Health Organization is that a country should spend at least 3% of its GDP on health. Huh? The World Health और सेंटर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा stipulates that a country should spend 3% of its GDP on health. तो यहां पर वी आर लैकिंग. ठीक है? The life expectancy of an Indian in 2020 was 70.12 years. $70.12 अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से डेवलप कंट्रीज से तो देखिए यूएसए इट इज 77.2 years and Japan in the same period is equal to 84.6 years. तो मतलब हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी लो है ना? Then friends, the second important parameter, that is infant mortality rate. Infant mortality rate जहां डेवलप्ड कंट्रीज के लिए प्रेस्क्राइब्ड है बिलो 10 per 1000, इन इंडिया इट इज 95 per 1000 live births. ठीक? Now, then we come to maternal mortality rate. सर ये सब डाटा मतलब प्लेन में तो नहीं आएगा ना? खूब आएगा, खूब आएगा. जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं बॉस बस इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं और ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया के हेल्थ के, तो इट कैनॉट बी ट्राइफल्ड विथ. एंड लेट मी टेल यू बाय एंड लार्ज, प्लीज बी केयरफुल अबाउट द इंफॉर्मेशन बीइंग कैरिड आउट टू यू इन दीज वीडियोस, है ना? एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है? And here it is Jharkhand also.
No, will be specifically dealing with Jharkhand in paper 2. But for your paper 1 also, for the country as a whole also, they are very important. Maternal mortality rate. This is equal to 52 per 1 lakh live births. अब ये चीज काफी कम है. It's a 10 lakh ना? 1 लाख. काबिले गौर बात ये है कि 2014 में ये 130 था. हाँ, इट वॉज 130 पर लाख 2014 में एंड 97 पर लाख इन 2018. तो देखिए मोदी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है. सर 52 कौन सा ईयर का है? ये 2022. 22. हर 4 साल पे देखिए सरकार ने कैसे मैटरनल मोर्टालिटी रेट को घटा दिया है. तो दे हैव डन अ गुड जॉब हियर. हेल्थ पैरामीटर्स की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट, another very important indicator of child and maternal care, crude birth rate this was 16.949 per thousand in 2022. ठीक है, क्लियर. नाउ as it is, as far as education is concerned, the Indian government in its 2022-23 budget the Indian government spent 2.9% of its GDP जबकि अगर आप तुलना कर लें तो इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिस एक्सपेंडिचर वाज about 6% of the GDP. USA में और 9.2% of the GDP स्वीडन. अब देखिए मेंस में जब आप लिखेंगे और ऐसे कंपैरेटिव डेटा वगैरह देते हैं, कौन एग्जामिनर आपको काट सकता है जरा बताइए, है ना. So this is the condition of human resources development in India. Recent Nobel Prizes in economics, they have been given on theories which state time and again that human resource is the priciest resource. It is the most valuable resource. And a country, Japan has no minerals, negligible minerals. But Japan is one of the most developed countries in the world precisely because it has focused on human resources development. ठीक है, so the human resource development is vital to the development of a country. अब तीसरा चीज, a profile of the Indian economy. Sectoral profile of the Indian economy.
देखिए हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम क्राइटेरियन देख लिया, हम लोगों ने जो है सोशल इंडिकेटर्स देख लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नाउ वी कम टू sectoral profile of the Indian economy. As it is, friends, India has developed, India has evolved, but India has still not landed up in the group of so-called developed countries. As in 2023 AD, सबसे पहली चीज around 58% of the Indians live in villages. Are engaged in agriculture. ठीक, जबकि this figure is 4% in the USA, 1.4% in Great Britain, and 5.0% in Japan. Right? Now the primary sector, the second important criterion for differentiation. The primary sector and primary sector comprises of agriculture, animal husbandry, poultry, forestry, apiary, beekeeping, मधुमक्खी, है ना, ये सब आप एग्रीकल्चर के हैं भाई, है ना. तो the primary sector accounted for 15.7% of the GDP. ठीक, whereas this situation was 1% in the USA, 0.7% in Great Britain, around 1.4% in Japan. Oh, sorry, very sorry. 5% in Japan. ठीक है, तो देखिए अभी भी इंडियन economy is comparatively more dependent on
the primary sector. ठीक है? Now, third thing, see, industry and manufacturing contribute about 26.3% of the GDP of India. ठीक है? If you compare it with other countries, in the USA, 20%, Great Britain, 21%, and Japan, 26.6%. अब देखिए, ये मिडिल टीयर है, ये मिडिल टीयर है, और यहां पर इंडिया लगभग पैरेलल है. तो मतलब इंडिया अब डेवलपिंग इकोनॉमी के हायर थ्रेशोल्ड में है, अब नॉक कर रहा है डेवलप्ड इकोनॉमी होने का. एंड डी, टर्शियरी सेक्टर accounts for about 40% of the GDP of India. ठीक है? जबकि यूएसए around 45%, Great Britain around 45%, Japan about 36%. टर्शियरी सेक्टर मतलब बैंकिंग, फाइनेंस, ये हो. एंड द लास्ट वन, क्वाटरनरी सेक्टर. बैंकिंग ही रहेगा ना? नहीं, बैंकिंग आएगा, फाइनेंस सर्विसेज आएगा, इंश्योरेंस आएगा, तमाम आएगा. क्वाटरनरी सेक्टर फ्रंटियर एरियाज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, इस तरह का फ्रंटियर एरियाज. अकाउंट फॉर about 16 to 17% of our GDP. जबकि ये देखिए, यूएसए में about 22%, ब्रिटेन about 23%, जापान about 22%. तो यहीं पर थोड़ा सा हम पीछे रह गए हैं. ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ये सब. तो फ्रेंड, that accounts for the nature of the Indian economy, and everything is vitally important for you. ठीक है? In our next lecture we will be dealing with things some which are very very important. ठीक है?
Right? So we end up for the day here. It's almost time up, and after a 5 minutes to 10 minutes break, we'll begin paper